Dear class, we already have discussed that heat is a form of energy which can be transferred from one body to another due to the temperature difference. If there is temperature difference, then heat flows from one body to another body. There are three ways in which heat can be transferred from one body to another body. One is by conduction, another is by convection, and third is by radiation. So here we are going to talk about conduction first. So we must remember that कंडक्शन जो है वो है क्या, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. बट ट्रांसफ़र ऑफ हीट कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा. मतलब एक एंड जो है हाई टेम्परेचर पर होगा, एक एंड जो है वो लो टेम्परेचर पर होगा. एक एंड हॉट होगा, दूसरा एंड कोल्ड होगा. तभी कंपैरेटिवली तभी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी. इज दैट क्लियर? सो इन कंडक्शन वी हैव एन एक्टिविटी इन योर बुक. तो एक मेटलिक रॉड ली गई है, किसी भी मेटल की हो सकती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन. लेट अस टेक रॉड. उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए और वैक्स की हेल्प से, मोम की हेल्प से चिपका लीजिए. इक्वल इंटरवल्स पर चिपका लिए. देर आफ्टर आप उसे दो ईंटों के बीच में रख दीजिए जैसा कि रखा हुआ है, और एक एंड जो कि दूर है उसे आप कैंडल की हेल्प से हीट अप कीजिए. जब आप इसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये गर्म होता है, ये वाला एंड जब गर्म होगा तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट एल्यूमिनियम फॉयल जो आपने चिपकाई हुई थी, इट विल फॉल डाउन. वाई? बिकॉज यहाँ पर जब हीट एनर्जी पहुँचेगी तो जो वैक्स था वो पिघल जाएगा और ये एल्यूमिनियम फॉयल गिरेगी सबसे पहले. इसके बाद इसका नंबर आएगा, देन दिस एल्यूमिनियम फॉयल विल फॉल डाउन, एंड फाइनली one by one all the aluminum foil will fall down as the temperature rises in this metallic rod. but आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. आई मीन हीट एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो टेम्परेचर पहले इस एंड का बढ़ेगा, फिर इस एंड का बढ़ रहा है, फिर इस एंड का बढ़ रहा है. तो हीट एनर्जी फ्लो हो रही है. कहाँ से कहाँ? द एंड विच वॉज एट हाई टेम्परेचर, from that end to the end which was at low temperature. This is the activity which tells us that heat flows from one part to another due to the temperature difference. अब इस एक्टिविटी में एक खास बात है, वो ये कि जो हीट एनर्जी है वो इसी मेटलिक रॉड में क्यों फ्लो हो रही है. वाई? बिकॉज इन दिस मटीरियल वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat. That is why heat is flowing. So material is required. In the body, in the material, in the object itself, the heat is traveling. Such mode of transfer of heat in which heat travels from high temperature to low temperature in a material where the material is not moving. Material is not moving. That mode of heat is called conduction. That mode of heat is called conduction. Now let us talk about this activity. In this activity, in this beaker, we have different type of materials. This is a plastic scale, this is a pencil, wooden pencil, this is spoon, and this is compass. I hope you can see. And in this activity basically you have to see whether the heat is traveling from one end to another. So basically what you can do is you can take an hot object and touch that hot object with first scale, and then by pencil, and then spoon, and then magnetic, and then this compass. You will see that in some materials you will feel hot at the other end after some time, whereas in some other material you will not feel so. तो जो जिन मटेरियल में आपको दूसरा एंड जो है थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाएगा, दैट मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ हीट. क्यों? क्योंकि जिसे आपने टच किया और आपको फील ही नहीं हो रहा. मान लो मैंने स्केल, प्लास्टिक स्केल यूज़ किया, तो प्लास्टिक स्केल में क्या होगा कि अगर आप इस एंड को, अगर आप ये एंड गर्म भी होता है तो इस एंड तक हीट एनर्जी नहीं पहुँचेगी.
तो यहाँ पर ठंडा ही रहेगा। तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो बर्तन हैं जिनमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, उनके जो हैंडल हैं उसमें प्लास्टिक लगा होता है, तो वो हमें जो है हीट से या फायर से बचाता है, गर्म हमें नुकसान ना हो। लकड़ी भी जो है, दैट पेंसिल इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट कंडक्ट heat. But this spoon and compass, they'll allow the heat, and you will see that the other end gets heated up. So we can classify the materials on the basis of whether they conduct heat or not. We can classify the materials into two categories, and these categories are conductor of heat, good conductor of heat, good conductor of heat, and bad conductor of heat. Right? So I hope you have understood. There is one question in your exercise. You have to give an example of good conductor and bad conductor of heat. You can give many examples, as many as you want. So that's all for this video.